Hello friends, today we are here to study about a very interesting topic for class 6 science, and the name of the topic is diversity in the living world. Diversity. What do you understand by this term? Diversity is nothing but the differences. In this chapter we are going to study about the differences in the living world. So let's begin with the chapter. Again, diversity means the variety of differences. In this chapter, we are going to learn about the differences in the living beings or in the living organism. In this chapter, the plants and the animals, there are two types of living organisms. We are going to study about the diversification in this chapter. They both comes under the biodiversity. So, biodiversity is the variety of living organisms found on earth. Examples are plants, animal, fungi, microorganism. They together make up our biodiversity. इस चैप्टर में जो हम डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं. हम जान रहे हैं दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फर्स्ट इज द प्लांट, सेकंड इज द एनिमल्स. तो इस पूरे एंटायर चैप्टर में हमें इन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जो भी डाइवर्सिटी है, उनके रहना, उनका जो हैबिटेट्स होते हैं या उनकी अडेप्टेशंस होती हैं, हम थ्रू आउट द चैप्टर ये सब पढ़ेंगे. So before starting, let us find out what are the living things around us. Living things are found in different places called habitat. ये अलग अलग टाइप के जो लिविंग बींग्स होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हमारे अराउंड में जो जिस जगह में पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं हैबिटेट्स, राइट. प्लांट्स भी हम देखेंगे हमारे आसपास काफी ज्यादा ग्रीनरी होती है, तो ये उनका हैबिटेट है. एनिमल्स हमारे आसपास यूजुअली हर टाइप के एनिमल्स नहीं मिलते हैं. क्यों? क्योंकि वो हर एरिया में कंफर्टेबल नहीं होते रहने के लिए. दे हैव अ स्पेसिफिक एरिया इन विच दे आर कंफर्टेबल टू लिव अराउंड. दैट इज व्हाई द टर्म हैबिटेट is introduced. Now, there are two type of habitats, terrestrial and aquatic habitat. What does terrestrial habitat means? Terrestrial habitat signifies the land. There are different type of land like forest, desert, mountain, grasslands. There are different type of lands in which the different type of animals and plants can survive. Similarly, aquatic habitat, the word aqua clearly explain water. So different type of water places like ponds, rivers, lakes and ocean, इनके अंदर जो कि हमारे plants और animals रहते हैं उनको हम aquatic plants and animals बोलते हैं. Now the characteristics of the living things. हम living things को कैसे एक दूसरे से differentiate करते हैं या जो हमारे living things होते हैं उनके क्या characteristics होते हैं कि हम उनको बता सके yes they are living. So the characteristics are that living things always need food to grow, to survive, or to inspire themselves or to reproduce themselves. They need food. They need breathe. They have to breathe or they have to respire themselves. They always grow. They move from one places to another. Plant also shows some kind of movement. We will study it in the later chapters. They also reproduce. Yes, plants and animal both are living. So obviously they both reproduce. Plant reproduce in other type and animals also reproduce some way or the other. Respond to stimuli means touching the light, touching the heat, they do respond. That is called stimuli. Excrete waste. Plant also in a way or other excrete itself. मतलब वो आपको किस तरह से plants जो उनका waste materials होता है उसको कैसे excrete करते हैं ये भी हम आपको आगे इस chapter में बताएंगे. And also animals, they do also excrete because obviously they are living organism. They have a particular lifespan. दोनों की अपनी अपनी एक आयु होती है, एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन होता है कि प्लांट्स भी एक टाइम के बाद दे become dead or they end their life. Similarly, animals also do the same. So the basic difference between the living and the non-living things are living things grow naturally, whereas non-living things doesn't grow naturally. Living things need food and water, but on the other hand, non-living things doesn't need any food or water to grow. Living things respire, but non-living things do not respire. Living things reproduce, but non-living things cannot reproduce. And the living things respond to the surrounding, but non-living things cannot respond to the surrounding.
Now let's come to the point where the classification of a living organism. Why do we need classification? Classification means grouping organism based on similarities and differences. हम जो भी अपने किसी भी चीज के अगर हम ग्रुपिंग कर दें तो हम उस चीज को अंडरस्टैंडिंग हमारी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है. इसीलिए क्लासिफिकेशन जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, बेसिकली हम यहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा इजी अंडरस्टैंडिंग वे में आ जाएगा. दैट इज why is classification important? To make the study very easier, help identify organisms, show relationship among different organisms, and avoid confusion caused by the local names. क्लासिफिकेशन अगर हम किसी भी चीज के कोई ग्रुप्स बना दें तो वो बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, बहुत अच्छे से हम उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनके बीच का डिफरेंट डिफरेंट जो भी रिलेशंस होता है उनको भी हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. इसलिए क्लासिफिकेशन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जैसे कि हम प्लांट्स को अगर हम क्लासिफाई कर दें, फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस, अकॉर्डिंग टू द स्टेम, नेचर ऑफ द स्टेम्स, तो हम प्लांट्स को बहुत अच्छे से क्लासिफाई करेंगे इन 5 ग्रुप्स में. फॉर एग्जाम्पल हर्ब्स, shrubs, trees, climbers and creepers. These are the 5 classification of plants. And how they are classified? They are classified according to their sizes, according to the nature of the stems, right? So herbs क्या होते हैं? They are very small, they were very small plants, less than 1 millimeter high, and they have a very green and tender stem and very very few branches. You have seen the example of a mint or the tomato. They are very perfect example for the herbs. Now the second point for the plants are shrubs. They are medium in size, particularly 1 to 3 meter high, and their nature of the stem is hard, not very hard, but yeah, quite hard, and but not very thick branches near the base of the stem. Their जो उसका stem होता है वो थोड़ा सा hard होता है, but बहुत ज़्यादा hard नहीं होता, और जो होता है thick branches उनकी होती है. Example is lemon and rose. Yes, you have seen it around you. बहुत ही अच्छा example है shrubs का. Trees, they are more taller than the herbs and the shrub. Usually you can say they are 3 meter high. और जो उनका stem होता है, it is particularly hard and a woody thick stems, branches on the upper side of the stems. Example, obviously neem, peepal, mango, they are perfect example for any kind of tree. Climbers. Climbers, as the name suggests, can be very tall. Why? Because it climbs. They have a very soft stem. They need support, or they need support to climb or to stand. क्लाइंबर्स, जो कि नाम से समझ आ रहा है हमें, वो क्लाइंब करते हैं. क्यों क्लाइंब उनको क्लाइंब करने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं एंड दे नीड सपोर्ट ऑल द टाइम. एग्जाम्पल्स आर ग्रेप वाइन, पी, मनी प्लांट, perfect examples. Now the fifth type of plants are creepers. They can be very long. उनकी हम जो लेंथ होती है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, because soft stem that cannot stand erect creep on the soil surface. इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, creep means creepers, जो रेंगते रहते हैं या जो कि फैल जाते हैं ग्राउंड पे. ओके, बट इनके साथ जो इनके एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रॉबेरी, मिंट, ये आपके परफेक्ट एग्जाम्पल है in the form of creeper plants. Now let's go to the next. Patterns on the leaves. ये भी हमारा क्लासिफिकेशन में ही आता है. हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा 5 types of plants like herbs, shrubs, trees, creepers and the climbers. Now patterns on the leaves also classify the types of the plants. How? For example, you have seen some kind of patterns like net-like structure here on the pattern. That pattern is known as reticulate variation. In this net-like patterns of the veins on both sides of the thick middle vein. Okay, this is the perfect example of a hibiscus plant leaf. Here in which you can see ये जो mid vein जा रही है, इसके बीच में जो पतली पतली veins है, ये एक net type structure बनाती है. इस पूरे पैटर्न को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेरिएशन. ये एक टाइप की लीव होती है जो कि एक पैटर्न शो करती है. ऑन द अदर हैंड सेकेंड टाइप ऑफ पैटर्न इज पैरेलल वेरिएशन. अब इसमें क्या होता है, इसमें जो वेन्स होती हैं दे रन पैरेलल.
लाइक दिस। यहाँ पे जो एक मिड वेन जा रही है उसके पैरेलल में जो भी वेन्स जाती हैं पतली पतली, ये एक पैरेलल लाइंस बनाती हैं, पैरेलल फॉर्म्स बनाती हैं, राइट। एग्जाम्पल्स आर बनाना, लीव्स एंड द ग्रास। नाउ types of roots. There are two types of root. We have studied it in the previous classes also. Type of root means tap root and the fibrous root. In the tap root, plant consists of one main root and small side root arising from it. यहाँ पे जो हमने देखा था, हमारी जो टैप रूट सिस्टम में होता है, एक जो होती है मेन रूट होती है और उसके साइड्स में डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल साइड रूट्स आते हैं। ओके, एंड इन द फिब्रस रूट क्या होता है, स्मॉल थिन थिन साइजेस की जो रूट्स होती हैं वो अपेयर होती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम से, दैट इज कॉल्ड द fibrous root. Example of a taproot is hibiscus, sadabahar, whereas examples of the fibrous root system is grass and the lemongrass. अब इन दोनों को अगर हम मर्ज करेंगे तो हम इनको ये बता सकते हैं that the plants with a taproot system have a reticulate venation, all right, whereas the plants with a fibrous root having a pellular venations. Example of a taproot system having a reticulate venation, chickpea is the best example, whereas the plants with the fibrous root having a pellular venation, wheat is the perfect example for it. Let us move on now to the animals. Now, animals can also be classified according to their habitat, right? Animals को भी हम habitat के according अगर हम classify करें तो there are of two types, terrestrial habitat and aquatic habitat. Now, the areas or the animals which lives in the terrestrial habitat, they are lion, elephant, giraffe, many animals you can see. Mostly the animals जो कि हमारे terrestrial lands में रहते हैं या terrestrial या land habitat में रहते हैं वो आपने देखे ही होंगे. Aquatic habitat में वो सारे animals आते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं. There are another kind of habitats or animals you can say, they are amphibians like frogs जो कि दोनों में रहते हैं. एरियल जो कि आपके ज्यादातर एयर में रहते हैं, एंड एर्बोरियल मंकीज एंड स्क्वेरल जो कि एक दूसरे से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में डेजर्ट, माउंटेन एंड ग्रासलैंड्स आते हैं, वेरियस एक्वेटिक हैबिटेट्स में ओशंस एंड पॉन्ड्स में हम अपने प्लांट्स एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे. अब फूड हैबिटेट्स भी आते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में. हाउ? हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि हमारे काउज एंड डियर्स हो गए, परफेक्ट एग्जांपल. कार्निवोर्स आर द अदर ईटिंग एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, फॉर एग्जांपल लायंस एंड टाइगर्स. ऑमनिवोरस वो टाइप के एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को खाते हैं. ऑब्वियसली ह्यूमन इज ऑल्सो एन ऑमनिवोरस एंड बेयर इज ऑल्सो अमंग देम. Now, animals can also be classified based on the presence of the backbone, or you can say skeletons. इन पर्टिकुलर टाइप को एनिमल्स को हम डिवाइड करते हैं वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में. नाउ व्हाट आर वर्टिब्रेट्स? Animals that have a backbone or spinal column. This group is further divided into 5 main classes, which are fish, amphibians, reptiles, birds and mammals. Now fish क्या होते हैं? Aquatic animals which have gills and fins. Any example you can take like rohu and shark. Amphibians, animals with a moist skin that breathe in water. Examples are frogs. Reptiles, those who crawl with the scales in them, like snakes और lizards आपने देखे होंगे, उनके ऊपर जो स्किन के ऊपर जो होते हैं वो स्केल्स बने होते हैं. दे यूजुअली क्रीप अराउंड, वो आपके ग्राउंड पे या फिर आपके वॉल्स वगैरह पे, स्नेक्स तो नहीं बट हाँ आपने लिजर्ड्स देखे होंगे, वो वॉल पे आराम से मूव ऑन कर सकते हैं, वो रेप्टाइल फैमिली के अंदर आते हैं. बर्ड्स, द एनिमल्स विद feathers and the wings, they move around in air with the help of their wings and feathers. Mammals, the animals that give birth to the young ones and produce milk. ह्यूमन भी इस कैटेगरी में आते हैं, लाइक ह्यूमंस हो गए, काउज हो गए, वेल्स होंगे, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड दे आल्सो गिव मिल्क. इसी तरह से
हम यहाँ देख सकते हैं कि fish, amphibian, reptiles, birds and mammals, these are the 5 group of vertebrates. Vertebrates means those animals which have skeleton in them, which have bones in them. Now, the invertebrates animals, the animals they do not have any kind of backbone, and under this category, insects like butterflies, earthworms and spiders comes, right? Some examples are starfish also there. Adaptation. Adaptation is a feature that help an organism survive in its habitat. ये एक वो फीचर है या यू कैन से इट्स अ बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम द नेचर जो कि हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को सरवाइव करने के लिए हेल्प करता है. व्हाई? बिकॉज द प्लांट्स एंड एनिमल्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उस हैबिटेट में रहने के लिए जिस हैबिटेट में वो सरवाइव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, camel stores fat and has a broad feet for the deserts. Fish have gills and fins for living in the water. Polar bear, they have a thick fur for cold regions, whereas a cactus has a spine instead of leaves to reduce the water loss. Camels, हम एग्जाम्पल अभी एडेप्टेशन का एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं थ्रू एनिमल्स. कैमल्स जो होते हैं अपने हम्स के अंदर जो होते हैं फैट स्टोर कर देते हैं और उनके जो फीट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं सो दैट दे कैन वॉक इजिली इन द डेजर्ट. ये क्या है? ये एक उनकी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एडेप्टेशन है. फिश के अंदर जो होते हैं वो गिल्स और फिन्स होती हैं सो दैट दे कैन लिव इन द वाटर, दे कैन मूव फ्रीली. पोलर बेयर, दे हैव अ थिक फर. व्हाई? टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ इन अ कोल्ड रीजन्स. On the other hand, the plants like cactus, they have spines instead of leaves. Why? To reduce the water loss. Also, they have a thick skin, or you can say the thick उनका जो skin होता है, जो उनकी वैक्सी स्टेम्स होती हैं वो बहुत थिक होती हैं सो दैट जो वाटर लॉस होगा वो इन कैक्टस में, इन प्लांट्स में कम होता है. तो ये क्या है? ये सारे फीचर्स जो होते हैं अडेप्टेशंस में काउंट होते हैं. Now let us study adaptation more clearly with the help of some examples from plants and animals. Let us study about the plant in the desert. You have particularly seen the famous plant in the desert is the cactus. Why? Because of its special nature. Because of its special adaptation to the nature. Cactus का क्या होता है? They have a particular thick waxy skin. They have a large fleshy stems. They have spikes on it. Also, they have a good and shallow widespread roots. हमारे जो डेजर्ट्स होते हैं यूजुअली उसमें हमें प्लांट्स और ट्रीज वगैरह नहीं दिखते. जो भी हमें दिखता है एक प्लांट के फॉर्म में वो हमें दिखता है कैक्टस. अब कैक्टस जो होता है डेजर्ट में कैसे सरवाइव करता है? बिकॉज ऑफ द अडेप्टेशन टू इट्स नेचर दे हैव अ गुड थिक स्किन. अब जो उसका स्किन होता है वो इतना थिक होता है क्योंकि जो वाटर उसके अंदर होता है, वाटर कंटेंट प्लांट के अंदर जो भी होता है वो ड्यू टू द हॉट वेदर और ड्यू टू द डेजर्ट, क्योंकि वहाँ हॉट वेदर होता है, वो उसका वाटर लॉस जो होगा वो कम होगा बिकॉज ऑफ दिस देयर हार्ड स्किन. सेकेंड डिफरेंस इज द लार्ज फ्लैशी स्टेम. उनकी कैक्टस की जितने भी फ्लैशी स्टेम्स होती हैं वो भी काफी अच्छी खासी मोटी होती है, बट अगेन ऑल्सो उनका जो स्किन होता है वो काफी थिक होता है. थर्ड इज स्पाइक्स. कैक्टस के अंदर काफी सारी स्पाइक्स होती हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ द वाटर रिटेंशन उसमें काफी कम होता है उस स्पाइक्स होने की वजह से. ऑल्सो दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स. और नंबर फोर्थ इज द शैलो वाइड स्प्रेड रूट. कैक्टस क्योंकि डेजर्ट में यूजुअली फाइंड आउट होते हैं, अब उनको डेजर्ट में पानी की अवेलेबिलिटी काफी कम होती है तो उनकी जो रूट्स होती है कैक्टस की वो काफी वाइड स्प्रेड होती है, मतलब दूर दूर तक फैली होती है और वो जितना भी हो सकता है अवेलेबल वाटर आपको डेजर्ट में वो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए जो कैक्टस की जो भी रूट्स होती हैं वो काफी वाइड स्प्रेड होती है. नाउ कम टूवर्ड्स द एनिमल पार्ट. Animals, for in case of animals, we can easily differentiate between the camels in the hot red desert and the camels in the cold desert. इससे हमें अपना adaptation easily समझ आएगा in animals. Now the camels in the hot desert, they have a long and a wide hooves which help them to walk on sand without sinking. Animals जो कि hot weathers में रहते हैं, hot desert में रहते हैं, like camel, उनके जो होते हैं लेग्स जो होते हैं काफी लॉन्ग होते हैं, उनके हूव्स जो होते हैं वो वाइड होते हैं. व्हाई? बिकॉज दे हेल्प देम टू वॉक ऑन अ डेजर्ट. अगर वो
नॉर्मली हम लोग जैसे डेजर्ट में वॉक करेंगे तो हम सिंक आउट कर जाएंगे, बट कैमल्स नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके जो लेग्स होते हैं काफी लॉन्ग होते हैं, उनके जो हूव्स होते हैं, जो उनके पंजे होते हैं, वो काफी वाइड स्प्रेड होते हैं ताकि एरिया जो होता है उसमें बड़ा हो जाए, और वो उनको सिंक आउट करने के लिए प्रोटेक्ट करते हैं उससे। Whereas the camel in the cold desert, they have a short legs, and because of their short leg, they can walk easily in the mountain. Now the second difference is about their humps. आप देख के आप कैसे कैमल्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कोल्ड रीजन का है या हॉट रीजन का है? बिकॉज ऑफ देयर hump. The camel in the hot region, they have usually one hump, whereas the camel in the cold region, they have a two hump. Number three, अब इन hump का क्या इंपॉर्टेंस होती है? hump की बहुत इंपॉर्टेंस होती है कैमल्स के अंदर, because they store food in the hump to survive when the food is not there. Now the stored food in the humps, they shrink in the late winters when the food is less. अब ये हम क्या करते हैं, जो हमारे हॉट एरियाज में जो भी कैमल्स होते हैं उनका वन हम्प होता है, क्योंकि उनको एक टाइम, काफी कम टाइम में पानी प्रोवाइड होता है, बहुत टाइम बाद उनको पानी मिलता है, तो जितना भी वो पानी और फूड जो भी होता है वो स्टोर कर लेते हैं अपने हम्प्स के अंदर, और वो धीरे धीरे उसको यूज आउट करते हैं। मगर जो हमारे कैमल्स होते हैं जो हॉट रीजन में होते हैं, उनके पास दो हम्प्स होते हैं ऑल्सो, जो कि उनका फूड और वाटर जो अपने हम्प में स्टोर करते हैं वो धीरे धीरे श्रिंक कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो लेट विंटर्स में जहाँ पे पानी और खाना पीना कम मिलता है इन कैमल्स को, वो उस हम्प में जो इतना भी फूड स्टोर्ड होता है उसको यूज आउट करते हैं, और जैसे जैसे वो यूज होगा वो उनका हम्प जो होता है वो श्रिंक करना हो जाता है। फोर्थ डिफरेंस इज द हेयर. The camels in the hot region, they have a short hair so that they can stay themselves quite cool in the hot weather. Whereas the camel in the cold weather, they have a long hair to from a head to neck to stay themselves warm in the cold region. Now the camels in the hot region or the hot desert, they live in a desert like the Thar desert, whereas the camels in the cold desert, they live in a desert like the Ladakh. Now let us revise the adaptation topic once again. That adaptation means a special feature that helps the plant and animal to live in their habitat. Animal adaptation we can clearly see in the example, with the example of a camel, polar bear, fish, chameleon. Whereas the plant adaptation you can see in the cactus, trees, and the desert plant. Cactus, we have seen that cactus stores water and has spines, whereas the trees have broad leaves to get sunlight. Desert plants, they have a thick stems to save water. Now, why the adaptation is important? Important because it helps the living being things to survive. They help them find food and they protect them from the danger. And the fun fact is that the animal and plants slowly adapt over many years. Now, this all shows the biodiversity. Now, why the biodiversity is very important? Yes, it is important because it has to maintain the ecological balance. They provide food, medicine, and shelter. Biodiversity also support agriculture. They keeps the environment healthy and protect in ecosystem. Right. Now, अब ये जो बायोडाइवर्सिटी थी इसको मेंटेन करना, इकोलॉजिकल बैलेंस को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बायोडाइवर्सिटी हमने पढ़ा था, जो प्लांट्स, एनिमल्स और जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जब इस डाइवर्सिफिकेशन के साथ एक इकोसिस्टम में रहते हैं उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही ज़रूरी हैं हमारे नेचर के लिए टू प्रोवाइड इकोलॉजिकल बैलेंस। दे प्रोवाइड फूड, मेडिसिन एंड शेल्टर। किसी किसी प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं हमारे एनिमल्स के लिए, एक शेल्टर की तरह से काम करते हैं। ये एक दूसरे को, हमें स्पेशली ह्यूमंस को, या आप बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। कहाँ से मिलती है हमें? प्लांट से मिलती है। तो दे प्रोवाइड फूड एंड मेडिसिन एंड ऑल्सो शेल्टर टू सम काइंड ऑफ एनिमल्स। नाउ दे सपोर्ट एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली जो हमारा एग्रीकल्चर हो रहा है इसमें हमें, जैसे कि हम खेती कर रहे हैं तो हम उसमें एनिमल्स का भी यूज करते हैं वो खेती करने के लिए। लाइक हमने बफेलोज को यूज किया, हमने काउस को यूज किया। हमारा, दे सपोर्ट एग्रीकल्चर। नाउ कीप्स द एनवायरनमेंट हेल्दी। यस, ऑब्वियसली अगर हमारा प्लांट्स होंगे तो हमारी ग्रीनरी रहेगी, हमारा इकोसिस्टम बहुत ग्रीन रहेगा, हमारा क्लीन रहेगा, फ्रेश एयर्स मिलेंगी। प्रोटेक्ट इकोसिस्टम मीन्स दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, तभी हमारा जो नेचर है वो वर्कआउट करता है।
नाउ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम इस बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करते हैं? यस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी कैन प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, avoiding deforestation, preventing pollution, protecting wildlife, using natural resources wisely. And how? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों साथ साथ चलते हैं। साथ साथ चलने का मतलब है कि जब हम मोर एंड मोर ट्रीज प्लांट करेंगे तो हमारे एनिमल्स के लिए भी एक वो शेल्टर प्रोवाइड करता है। इसलिए हमें डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज को भी कट करना चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो हमारा जो एनिमल सिस्टम है, हमारी बर्ड्स होगी, हमारी स्क्विरल्स होगी, इन सबको भी शेल्टर मिलता है, इन लोगों को भी घर मिलता है, प्रोवाइड होता है। प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन, प्लांट्स लगाने से हमारा पॉल्यूशन कम होता है, खत्म नहीं होता बट यस कम होता है। प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, हमारी वाइल्ड लाइफ को जो है, ये हमारा फॉरेस्ट हो गया, हमारे जंगल्स हो गए, हमारे डेजर्ट्स और लैंड माइंस, हमारे जितने भी ग्रासलैंड्स हो गए, इस एरियाज में जितना भी हमारी प्लांटिंग होती है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ये हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए एक नेचर, उनके लिए एक हैबिट्स, उनका जो शेल्टर प्रोवाइड करता है, उनका हैबिटेट होता है। तो अगर हम जितना ग्रीनरी प्रोवाइड करेंगे उतना ही हमारे एनिमल्स के लिए नए नए होम बनेंगे और हम अपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली, जितने भी ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम जितना अच्छे से वाइजली यूज करेंगे, हमारी आगे आने वाली जनरेशन को भी प्रोवाइड होगा। नाउ द की टर्म्स आर of this chapters are biodiversity, like the variety of a living organisms. Habitat is nothing but a natural home of an organism. Adaptation is feature that help survival. Classification means grouping of any organism based on their similarities. Herbivores are the plant-eating animal. Carnivores are the flesh-eating animals. Omnivores are the who eat both plants and animals. Terrestrial means those any plants or animals, they both live on land. Aquatic means living in water. Now examples which are category are here and the examples are here. For the example, the herbs, we can say the best examples are the mint and the coriander. For shrubs, rose and hibiscus is there. Trees means mangoes and neems. Climbers, examples are peas and money plants. Creepers, pumpkin and the watermelons are the best examples. Herbivores, examples are cow and deer. Carnivores, lion and tiger. Omnivores are human and bear. If you found this video good for yourself or for any teaching method, please like and subscribe. Thank you.